Hello everybody, my name is Kajal and welcome to my channel. Today I'll be sharing with you how to do a Diwali glam. So let's begin. So using my Maybelline Master Prime, I'm just priming my face. Now I'll be using my Goof Proof Brow Pencil from Benefit. My shade is 4.5 and इससे पहले मैं अपने ऊपर के brows map out करूँगी and my underbrow and I'll be filling it. So this is one technique जिससे मैं अपने brow fill करती हूँ. For my other eye I'll be showing you the another technique that I use. As you can see मैं अपने brows बहुत हल्के हाथ से fill कर रही हूँ and जितना हो सके मैं उनको brush out कर रही हूँ. सो फॉर माई अदर ब्राउ मैं वापस अपने ब्राउ को मैप आउट करूँगी और उनको नीचे की तरफ ब्रश करूँगी. इससे क्या होगा कि जो बीच में के गैप्स हैं वो मुझे दिखेंगे और मैं उसमें अपने ब्राउ पेंसिल से हल्के हाथ से स्ट्रोक्स करूँगी. इससे मेरा ब्राउ फिल हो जाएगा. एंड अगेन मैं अपने आगे की तरफ उसी मैपिंग टेक्निक से ब्राउ फिल करूँगी. सो थोड़ा बहुत मेस हो गया है मेरा ब्राउ, एज यू कैन सी थोड़ा बहुत तो मैसी हो जाता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील. हम लोग उनको कंसीलर से क्लीन आउट कर लेंगे. सो नाउ यूजिंग माई LA गर्ल प्रो कंसीलर मैं अपने ब्राउज के एजेस को क्लीन कर दूंगी. इससे मेरे ब्राउज को और डिफाइन शेप मिलेगा. Now I will repeat the same on my other eye. I will also conceal the upper part of my brow, not the complete part, but जो ऊपर का edge part मुझे लगता है कि करने की ज़रूरत है, मैं उसे conceal करके उसको और define shape दूँगी. Now taking a beauty blender, I will take the same concealer because it has more of a yellow tone to it. इसलिए मैं normally उसको as मेरा concealer use नहीं करती, मैं उसे as a corrector use करती हूँ. मैं अपने dark circles and जो मेरा brow area define किया है उस concealer को, उसको अच्छे से blend कर दूँगी. Even the dark spot जो मेरे चेहरे पर है मैं उन पर भी उसको हल्के हाथ से घुमा दूँगी ताकि वो भी एक लाइट तरीके से कंसील हो जाए. So now taking my Huda Beauty foundation in the shade Amarti and my Maybelline Superstay foundation in the shade Natural Ivory, मैं दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाऊंगी. इन दोनों का मिक्सचर एक फुल ब्लोन कवरेज देता है एंड गिव्स एन एयर ब्रश कवरेज. सो मुझे ये दो कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है. Amarti is a bit darker for my skin tone and Natural Ivory is bit a lighter for my skin tone. तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे मेरा परफेक्ट शेड मिल जाता है. तो मैं इसको अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर फॉर दिस. ये पैक का ब्यूटी ब्लेंडर है. मैं अपने गले को भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग इज ऑल यू नीड. LA Girl Pro Concealer in the shade Beautiful Bronze. I'm using it to contour my cheeks, my nose, even my temple, and definitely my double chin. उसके बिना तो हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते. Will look like a potato. So after this I'll be taking my damp beauty blender, the same one, and मैं अपने cheeks को blend करना शुरू कर रही हूँ and मैं upward direction में कर रही हूँ ताकि वो एक definition दे. मैं अपने टेम्पल्स को भी अच्छे से ब्लेंड करी एंड टेक योर टाइम फॉर ब्लेंडिंग. ओके, डोंट हरी थिंग्स अप. अच्छे से ब्लेंड करें ताकि वो नेचुरल लगे. नाउ आई जस्ट रियलाइज़ कि इसमें थोड़ा सा मेरा कॉन्टोर टेढ़ा लग रहा है, बट एक्चुअली में वो टेढ़ा है नहीं. आई एम स्टिल ब्लेंडिंग इट रियली नाइस. ब्लेंडिंग माई डबल चिन एरिया. स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ब्लेंडिंग. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. Now taking my Maybelline concealer, I am just concealing as well as highlighting my under eye area, the mid portion of my face, which is the forehead, the bridge of the nose, the down of my lips, and around my lips a little.
Again with my damp beauty blender, I'll be blending everything out really nicely, and I'll take my nice sweet time for this. Taking my Huda Beauty loose powder in the shade Banana Bread, I'm not going to actually bake my eyes, I'm just going to like lightly set them, like now my under eye area and then my eyelid area, so that it looks really flawless and really airbrushed. So I'll be even setting around my mouth and near my nose area a bit, so that वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग एंड ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है फाउंडेशन का. सो आई बी सेटिंग इट रियली नाइस सो इट डजंट ब्रेक. एंड जो भी रेस्ट पाउडर मेरे स्पंज पे बचा है मैं पूरे अपने फेस पे सेट कर लूँगी. नाउ आई एम जस्ट बेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ माई आईज सो दैट मैं जब आई शेडो यूज़ करूँ तो फॉल आउट ना हो. So I'll be using the Huda Beauty Rose Gold Palette Remaster and using a flat brush, flat puffy brush. I'm taking the shade Sandalwood and I'm using it on my crease and I'm blending it really nice. And जितना आप brush को दूर से पकड़ते हो उतना आपकी blending soft होती है. So my goal is to blend it really soft. So now I'm using this really nice windshield motion technique to blend my eyeshadow and it's looking really nice. So now using a big fluffy blending brush, I'm taking the shade Demure from the same palette and I'm going to blend that in my crease. So I'm trying to blend both the colors with each other ताकि वो और डेप्थ दे सके मेरे crease को and it looks really smooth. Now taking the color Bubbly on my fingers, I'm just going to apply it on my eyeball area. Now taking a flat brush, I'm going to take the shade Moon Dust and apply it on my brow bone and the inner corner of my eye for that highlight effect. Taking the shade Henna, I'm going to apply it on my under eye area and I'm going to blend it really nice. So using my K Beauty eyeliner, I'll be drawing a small wing and I'm very nervous to do this on camera. This is like after a really long time I'm doing this on camera, so मेरे हाथ थोड़े से काँप रहे हैं. So bear with me. So I'm trying to do it on the second side, but उतना मेरे से हो नहीं रहा है. So I guess मैं ये off camera करने वाली हूँ. So I'm done with my liner and मैंने थोड़ा सा inner corner में भी एक छोटा सा liner बना दिया. Using my mascara, L'Oreal mascara, I am just using it on my eyelashes and maybe today I won't be using any fake lashes क्योंकि this mascara is the best mascara and वो अपने natural lashes को भी इतना सुंदर दिखा देता है. You actually feel as if you're using some falsies. So I don't think I'll be using any lashes.
So I'm using my Milani bronzer now and taking the lighter shade. I'll be bronzing my entire face with it, and I'm trying to bronze under the contour that I have applied. The best way to do is pinch your cheeks. So I'll be using both the shades, darker and lighter, to bronze my nose. So I'm lightly baking below my contour for that defined look. I'm using the Huda Beauty banana bread for this. I'll be even baking the bridge of my nose and the forehead a bit. So now I'm using this Maybelline Master Blush palette, and I'm using this peach shade. I don't think it has any name. This peach shade as my blush, and applying it on my apples as well as the high points of my cheeks. So taking a fan brush, I'm using the same palette and using the highlight shade in it, and I'm highlighting my face. So I'm highlighting my cheekbones, the temple area, and I guess I'll be using my finger to highlight my nose. Yeah, I'm using my finger now, and yeah, I'm highlighting the bridge of my nose because I feel that gives much better appeal to it. I'm blending that thing also out. I'm using this lipstick from MAC. The shade is Twig, and this is a really nice pink shade, and I actually like it for my soft looks. So I'm using this gloss from Nykaa. It's nice pink color gloss, and I'm applying it on my lipstick to give it more of a shiny and glossy look. And now I'm dusting my bake from all my face. So applying a bindi, I'm trying to complete my Bharatiya Nari look, and no Indian female could be complete in her look without a bindi, bangles, dupatta and all. I forgot to use my Fix Plus, so I'm using it now. So now I'm just removing my normal earrings and wearing some really nice jhumkas and trying to look traditional for Diwali. And yeah, this is my first Diwali after my marriage, and I'm excited about it. So I hope you guys like the tutorial, you like me doing all this stuff, and I would really appreciate it if you like, subscribe my channel and even share my video. So thank you for watching, and this is what the look looks like on me. I hope you try this on.